हेलो मेरे जोश वाले बच्चों, कैसा चल रहा है? तैयारी कैसी चल रही है एनएसईपी की? आई एम श्योर एनएसईपी 2024 को फोड़ने का जो इरादा है वो पक्का है. लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, इन द कमेंट बॉक्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चैलेंजिंग रेन क्वेश्चंस इन अ स्नैप. टोटल 3 क्वेश्चंस है. पहला थोड़ा इजी है, उसके बाद चैलेंजिंग आएंगे. वील डू देम इन अ स्नैप. Now, a little bit about me. My name is Bhavdeep Sethi. I have a passion to teach. I have a passion for physics, and I have a passion to convert every student into a physics lover. I say physics को रट्टा मारोगे तो physics बुरा मान जाएगी. As in physics को यार conceptually पढ़ना होता है, याद क्यों करना है? Now, why should you prepare for NSEP exam? Obviously, because this is your chance to represent Team India. है ना, यू बी पार्ट ऑफ टीम इंडिया. जब आप इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में जाओगे, the country, the nation is looking at you. But that is in the long run. Even in the short run, when you give the first stage exam that is NSCP, and you are in 1%, top 1% of your state, you get a merit certificate. इसकी वैल्यू बता बताकर मैं थक चुका हूँ. इट इज अ बिग अचीवमेंट इन इटसेल्फ. किसी भी इंटरव्यू में जाओगे, जब रेज्यूमे में लगाओगे, इट स्पीक्स फॉर यू कि भाई हाँ, NSCP. And also, when you study for these Olympiads, you study conceptually, and that confidence that you will get is going to directly help with any exam that you're preparing for. Okay, coming to the point today, challenging rain questions in a snap. So, कैसे करने हैं? So, पहला question, as I said, is going to be a little lighter as a warm up. So, a standing man observes rain falling with a velocity of 20 meters per second at an angle of 30 degrees with the vertical. Find the velocity with which the man should move so that the rain appears to fall vertically to him. Now, how do we start this? But before we start, let's understand a little concept here. The velocity of object with respect to the frame of reference is going to be velocity of object minus the velocity of the frame of reference. Frame of reference means observer basically, you know. So we have done this earlier, and you being NSEP aspirants, you already know this, कि velocity of something with respect to the frame of reference will be the velocity of that object minus the velocity of frame of reference. Common sense वाली बात है. So now they're saying the standing man observes rain falling with a velocity of 20 meters per second at an angle of 30 degrees. अब 30 degree ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है. The reason I got this easy question here is most of the confusion starts when students don't know कि भाई ऐसे 30 करना है कि ऐसे करना है. इस क्वेश्चन से मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है. सपोज हम मान के चलते हैं कि ये वर्टिकल है और basically the rain is falling like this at an angle of 30 degrees. Let's assume I don't know भाई उधर 30 है कि इधर 30 है, मुझे क्या पता, मैं कैसे मान लूं, मेरे को नहीं पता. तो this is the rain with 20 meters per second. Now we are saying the man walks, the boy walks. So let's say the boy walks in this direction with a velocity of v of frame of reference, है ना, यही तो है ना. Now we are saying how should he hold the umbrella? Umbrella कहाँ hold करेगा? जहां velocity of rain with respect to frame of reference. So velocity of rain माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ये वेलोसिटी ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो ऐसे हो जाएगी. सो द नेट वेलोसिटी विल बी दिस. अब तो उसको छाता और टेढ़ा करना पड़ गया भाई, उसको तो सीधा करना था. एंड दैट टेल्स यू कि दिस इज नॉट द राइट डायरेक्शन. दिस इज द रीजन आई स्टार्टेड विद दिस टू टेल यू कि अगर आपने एज्यूम किया ऐसे कर लो, पर आप जब करने बैठोगे क्वेश्चन को, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप छाता आपको और टेढ़ा करना है, तो नहीं, ये ठीक नहीं है. सो लेट्स इरेज दिस एंड स्टार्ट विद द राइट assumption ओवर देयर कि आपका जो रेन का डायरेक्शन है, that direction is something like this. It is with 20 meters per second in this direction at an angle of 30 degrees from here. Now they are saying what should be the velocity with which the person should walk. So let's say this person is walking with a velocity of v here. हमको ऐसी velocity पता करनी है कि छाता सीधा पकड़ना पड़े. मतलब the velocity of rain with respect to this person should be falling vertically. So that is the velocity of rain as an object minus velocity of frame of reference. Frame of reference this person, इसकी velocity minus करनी है, तो minus ले आते हैं और minus करके ऐसी लानी है कि जो resultant बने वो vertical बने ना. So this red, see, this is velocity of rain
माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो रेड इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो ऐसे पड़ेगा, पकड़ेगा छाता। बट दैट इज योर सोल्यूशन नाउ। इफ दिस एंगल वर 30 and then you want to find this velocity v, it's a piece of cake now. This angle being 30, this is the opposite. So sine 30, you will say sine of 30 is equal to this v divided by 20, है ना, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। अब 20 इधर आ जाएगा, साइन 30 1/2 होता है। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/2 multiplied by 20, and the answer is the person should be moving with 10 meters per second. The purpose of this question is to know कि भाई उस डायरेक्शन में लू कि इस डायरेक्शन में। तो आप देखो, जितनी आप स्पीड बढ़ाते जाओगे उतनी रेन की वेलोसिटी ऐसे ऐसे आती जाएगी, है ना। अगर आपकी थोड़ी सी वेलोसिटी होती तो रेन ऐसे दिखती, थोड़ी और हो गई ऐसे दिखती, थोड़ी और हो गई ऐसे दिखती, तो आपकी नेगेटिव वेलोसिटी ऐड करनी है उसमें। So let's move on to the next question here. Now the question says a man is coming down an incline of angle 30 degrees. When he walks with the speed of 2 root 3, he has to keep his umbrella vertical to protect himself from rain. The actual speed of the rain is 5 meters per second. At what angle with vertical should he keep his umbrella when he is at rest so that he does not get wet? तो बना लेते हैं इसको, है ना। तो यहां पर एक डायग्राम बनाता हूं मैं कि, ओहो कहाँ है भाई पेन, चलिए ये रहा पेन, है ना। इंक्लाइन 30 डिग्रीज का है, ठीक है, इंक्लाइन 30 डिग्रीज का बना देते हैं ऐसे कुछ, है ना। एज्यूमिंग दिस इज 30 डिग्रीज बिकॉज उन्होंने बोला है। अब इस पे कोई पर्सन बना दिया, पर्सन इज गोइंग विद 2 रूट 3। अब आप खुद देखिए, इफ दिस एंगल इज 30 डिग्रीज, दिस इज 2 रूट 3, इस पर्सन की वेलोसिटी कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू दिस एंड दिस। नाउ दिस इज व्हाट, आई मीन इतना तो आपको पता है भाई, दिस इज हाइपोटेन्यूस, दिस इज एंगल, सो दिस इज ऑपोजिट, सो दिस ऑपोजिट इज हाइपोटेन्यूस टाइम्स साइन ऑफ 30। साइन ऑफ 30 कितना होता है, साइन ऑफ 30 इज 1/2। so this velocity can be broken down, so this velocity of 2 root 3 can be broken down into this, which is sine 30 is 1/2 into this is root 3 की velocity हो गई। So you can say this plus this. Now this is cos 30 times of that. So 2 root 3 times cos 30. Cos 30 is root 3 by 2. So 2 root 3 multiplied by root 3 by 2, 2 कट जाएगा, root 3 3 बन जाएगा. So this is 3. So this person has a velocity of negative root 3 in this direction, 3 in this direction. So this is negative I, negative j. So velocity of frame of reference मुझे पता चल गया. Velocity of frame of reference is minus 3i minus root 3j. So this is the velocity of frame of reference. अब वेलोसिटी ऑफ रेन मुझे नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं वेलोसिटी ऑफ रेन को, कुछ मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। मुझे पता थोड़ी है कितनी है, तो मैं मान लेता हूं ना थोड़ी देर के लिए ये है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस द वेलोसिटी ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to frame of reference is velocity of rain, which is xi plus yj minus all this. So अभी obviously NSEP की तैयारी कर रहे हो, इतना अलजेब्रा तो है ना आता ही है कि इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। So I will write plus 3i plus root 3j, है ना। तो वो पर्सन जब 2 रूट 3 से नीचे आ रहा है तो उसको इस वेलोसिटी से रेन दिखनी चाहिए। पर वो कह रहे हैं when he walks with the speed of this, he has to keep his umbrella vertical. मतलब कि उस रेन में x कंपोनेंट है ही नहीं, वर्टिकल होल्ड कर रहा है ना, तो उसको तो ऐसे दिख रहा है। मतलब ये जो i कंपोनेंट है ये जीरो होना चाहिए, मतलब x plus 3 should be 0. That tells you x is -3. देखिए ये वैनिश हो जाएगा ना, क्योंकि वर्टिकल होना चाहिए, ये इसमें सिर्फ j होना चाहिए। j तो ठीक है, i सब कुछ 0 हो जाए, तो x plus 3 is 0, x is -3. So velocity of rain is minus 3i plus yj. चलिए आगे आगे देखिए कमाल की बात। वो बोल रहे थे एक्चुअल स्पीड ऑफ द रेन इज 3,
मतलब इसका मैग्नीट्यूड, सॉरी, एक्चुअल स्पीड ऑफ द रेन इज 5, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए। 3 4 5 का ट्रिपलेट लग रहा है ना, कि 3 और 4 होगा तभी तो रिजल्टेंट 5 होगा। पर अब ये -5 करोगे +5, देखिए रेन तो नीचे फॉल करेगी ना, रेन थोड़ी ऊपर जा रही है, तो जे के साथ तो माइनस आएगा। तो ये -4 सीधा मैंने लिख दिया, मैंने कुछ पेन का यूज नहीं किया इसको कैलकुलेट करने के लिए। सिंपल लॉजिक से कि 3 4 5 बनना चाहिए ट्रिपलेट और नेगेटिव जे होना चाहिए, तो रेन की वेलोसिटी आ गई। बस ये एक्चुअल रेन की वेलोसिटी है जो, है ना, फॉल कर रही है। तो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि एट व्हाट एंगल विद द वर्टिकल शुड ही कीप हिज अम्ब्रेला व्हेन ही इज एट रेस्ट, व्हेन ही इज एट रेस्ट ही विल सी दिस वेलोसिटी। व्हाट विल ही सी? ही विल सी द रेन फॉलिंग विद -3i + 4j। मतलब उसको यहां पर 4j है रेन का, यहां पर 3 है रेन का, ऐसे बन रहा है ना। रेन की जो -4 है और -3 है उसका रिजल्टेंट ये बन रहा है। तो अगर मैं इसको ठीक से वेक्टर डायग्राम बनाऊं, तो रेन की वेलोसिटी का वेक्टर डायग्राम सीधा सीधा बनता है कि रेन में एक तो ये कंपोनेंट है -3 का, है ना, और एक ये कंपोनेंट है -4 का, और रेन की जो वेलोसिटी है दैट इज दिस ग्रीन वेलोसिटी विच इज 5, -3 है -4। नाउ व्हाट शुड बी द एंगल? अच्छा एंगल पूछा है, तो एंगल विद द वर्टिकल निकालते हैं। मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछा है थीटा, मतलब दिस एंगल इज सेम एज दिस एंगल थीटा, दिस एंगल। अब एक छोटा सा देखिए, ये सबको पता होता है बट आई विल स्टिल रिपीट कि अगर ये 4 है, ये 3 है और ये 5 है, सो 3 के सामने वाला छोटा वाला एंगल इज गोइंग टू बी 37 डिग्रीज, और 4 के सामने वाला बड़ा एंगल इज गोइंग टू बी 53 डिग्रीज। दीज आर स्टैंडर्ड, दिस इज अ स्टैंडर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जहां पर 3 के सामने वाला 37, 4 के सामने वाला 53। तो 3 के सामने वाला पूछा है, दैट एंगल इज 37 डिग्रीज, एंड दैट इज योर आंसर। अब देखिए कितने सिंपल वे में आप क्वेश्चंस कर सकते हो। अदरवाइज दीज इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चंस दे कंफ्यूज मेनी स्टूडेंट्स। उनको लगता है यार सीधा अगर बंदा स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो इजी लगता है, इंक्लाइन वाला मुश्किल लगता है। इंक्लाइन को ऑलवेज ऑलवेज आई एंड जे के फॉर्मेट में आप करिए और आपको एक स्नैप में क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप आई जे के पैटर्न से करोगे कॉमन सेंस लगा के, इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी। सो लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन हियर। नाउ ड्यूरिंग अ रेनी डे, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद 2 meters per second। अब इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। A boy at rest starts running with an acceleration. Usually rain problems में acceleration नहीं होता, उसमें velocity होती है कि भाई boy is running, girl is running, but यहाँ तो acceleration दे दिया, velocity के नहीं, increasing velocity. Find the rate at which the angle of the axis of umbrella with vertical should change so that the boy does not get wet. मतलब बॉय को अगर गीला नहीं होना है तो उसको उस डायरेक्शन में छाता पकड़ना पड़ेगा जिस डायरेक्शन में he sees the rain coming, मतलब velocity of rain with respect to frame of reference. But velocity of rain with respect to frame of reference, मतलब इस डायरेक्शन में पकड़ना होता है ना, बट ये वेलोसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की इंक्रीज हो रही है, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है। तो इसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में करने का तरीका देखते हैं। हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाते हैं। भाई रेन की वेलोसिटी मुझे पता है, रेन की वेलोसिटी है 2 meters per second, वो तो फिक्स है ना, वो थोड़ी चेंज हो रही है। अब एक बॉय है जो एक छाता लेके चलना शुरू करता है with zero initial velocity, u is 0, a boy at rest, and has an acceleration of 2 meters per second square. So at any given time t, उसकी वेलोसिटी होगी v equals ut, v is equal to u plus at, slip of tongue, v is equal to u plus at, तो v is equal to 0 plus a which is 2 times t. So उसकी जो velocity होगी at any given time is going to be 2t. अब वो चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो जैसे जैसे चेंज हो रहा है उसका छाता भी टेढ़ा टेढ़ा होता रहेगा जैसे मर्जी, है ना। तो लेट्स सी व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन
with respect to the frame of reference, है ना, ये तो 2 है, 2t गलती से लिखा है. So the velocity of rain is 2 and this is 2t. So what is the direction the person has to hold the umbrella in this direction? है ना. अब वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन कितनी वेलोसिटी है ब्लू की, उनको इंटरेस्ट है कि ये एंगल कितना है, इस एंगल कितना रेट से चेंज हो रहा है ना. आई वांट टू फाइंड व्हाट इज माय गोल इज टू फाइंड डी थीटा बाय डी टी. देखिए यही तो पूछ रहे हैं वो. फाइंड द रेट एट विच द एंगल ऑफ एक्सिस ऑफ अम्ब्रेला विद, है ना, दैट शुड चेंज. डी थीटा बाय डी टी पता करना है. तो थीटा का रिलेशन क्या है इन सबसे? थीटा का तो सिंपल रिलेशन है कि भाई आई नो टेन थीटा इज इक्वल टू, है ना, 2t/2, है ना. ये थीटा है तो दिस इज द ऑपोजिट. तो 2t/2, 2t/2 तो t हो गया, है ना. 2t/2 इज 2t, है ना. 2 कट जाएगा. Now you want d theta by dt. तो we can differentiate. We can find the derivative on both sides. थोड़ा सा स्पेस यहाँ बना देता हूँ जिससे easy लगेगा लिखना. So I'm saying I want to find d theta by dt. So I'll say d by dt on both sides. Now d by dt of tan theta, secant square theta. So secant square theta. But let's do more systematic here. क्योंकि देखिए प्रॉब्लम है ये d by dt कर रहे हो, वेरिएबल इज थीटा, दैट डजंट वर्क. दिस इज अ फंक्शन ऑफ थीटा मुझे. सो यहाँ थीटा चाहिए तो आई गॉट टू यूज द चेन रूल. आई विल से d by d थीटा मल्टीप्लाइड बाय, है ना, d by d थीटा ऑफ tan थीटा, tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय d by dt ऑफ थीटा. तो मैंने किया क्या समझ ले. फंक्शन ऑफ थीटा यू कांट बी डिफरेंशिएटिंग विद अ वेरिएबल कॉल्ड t. यू हैव टू डिफरेंशिएट विद द वेरिएबल which is in that function itself. So what I did is tan theta can't be differentiated with respect to t. तो मैंने tan theta को का डेरिवेटिव लिया with respect to theta. अभी कोई बात नहीं, ये डुएबल हो गया. But now you got to multiply with the derivative of the new variable with respect to the original variable. ठीक है, हो गया. That is equal to d by dt of t, d by dt of t, अरे 1, वो तो 1 है. Now d by d theta of tan theta, secant square theta, secant square theta times d theta by dt is equal to 1. अब मेरे को पता क्या करना है, यहाँ पे पता मेरे को करना है d theta by dt. तो ये उधर ले जाता हूं. तो मेरे पास क्या बचा अभी, यहां पर मेरे पास आ गया d theta by dt is equal to 1 by secant square theta. Now 1 by secant is cos theta, है ना. cos theta secant theta reciprocal. So I can say d theta by dt is equal to cos square theta, है ना. Now theta, अभी theta यहाँ theta has to be found with something, है ना, given to us. What is it with the rate of time, with respect to time. तो यहाँ time लाना है. कोई बात नहीं. अब यहाँ देखो अगर ये थीटा है ना, दिस इज थीटा, दिस इज 2t, दिस इज t. तो व्हाट इज दिस ब्लू वन इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ ऑल दैट. तो मैं काम करता हूं, मैं सिंपल तरीका बताता हूं. ये 2t और 2 की जगह आप सिंपल ट्रायंगल बनाओ ना, इसको 1 कर दो, इसको t कर दो. अब ये 2 का आपने क्या करना है, इजी हो जाएगी ना लाइफ. इट्स द रेशियो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट आफ्टर ऑल. सो इफ दैट इज द केस एंड दिस इज थीटा, then this is 1, this is t. Pythagoras theorem says this is 1 plus t का स्क्वायर, 1 plus t का स्क्वायर. तो cos थीटा क्या होगा, कि cos थीटा चाहिए ना. cos थीटा is 1 divided by this. If this is theta, this is the adjacent, so adjacent by hypotenuse. तो cos theta is 1 divided by square root of 1 plus t का स्क्वायर. लेकिन उसका स्क्वायर चाहिए, तो 1 by this का स्क्वायर. So d theta by dt is equal to 1 by 1 plus t. हाँ, 1 plus, that is your answer. Unless यहाँ पर, हाँ, perfect, है ना. That is your final answer. So what is the rate of, है ना, change of this? It is this.
Okay. Now, when we solve these kind of questions, है ना, sometimes students say, सर ये तो ठीक है, क्वेश्चन बन गया, पर क्या मेरे से NSCP हो पाएगा? And I always show them कि भाई जब ध्रुव से हो गया, है ना, जिसने गोल्ड लिया, आदित्य अवनीश ने केमिस्ट्री में सिल्वर लिया, सो ध्रुव इज आवर गोल्ड मेडलिस्ट इन इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड। मैं NSCP की नहीं बात कर रहा, मैं इंडियन फिजिक्स ओलंपियाड की नहीं बात कर रहा हूं, मैं इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूं। तो जब इनसे हो गया, तो भाई आपसे भी हो जाएगा, क्यों? बड़ी कोई बड़ी बात नहीं। हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गोल्ड और सिल्वर लिया है। एंड कहाँ से शुरू करें इस जर्नी को? तो आई ऑलवेज से कि भाई एक सक्सेस इक्वेशन ले लीजिए कि जहां पर आपको एक गुरु चाहिए, डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क चाहिए, सक्सेस तो अपने आप ही आ जाएगी। अब गुरु कहाँ से ढूंढे? गुरु इज इन फ्रंट ऑफ यू। आई हैव बीन टेकिंग लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड हु हैव डन वंडर्स, आई वुड से। तो मेरी क्लास में आप आकर देख लीजिएगा किस लेवल से आप फिजिक्स पढ़ेंगे। Now I'm starting a new batch on NSCP का मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 ऑलरेडी हो गया, उसकी रिकॉर्डिंग में आपको दे दूंगा, बट मॉड्यूल 2 की पहले बात कर ले। सो देयर विल बी 3 क्लासेस इन अ वीक, 6 PM to 7:30 PM, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। असाइनमेंट एवरी लेक्चर के बाद नहीं होता, ये गलत लिखा है, एवरी डे होता है। सो यू विल बी पार्ट ऑफ ए टेलीग्राम ग्रुप, नॉट ए चैनल, ग्रुप, जहां पार्टिसिपेट करते हो। वहां पर आपको एक तो डाउट क्लियरिंग मिलेगा, आप डाउट पूछिए लाइव, स्टूडेंट्स एक दूसरे की डाउट्स क्लियर करते हैं, मैं क्लियर करता हूँ। बट इन एडिशन यू गेट असाइनमेंट ऑलमोस्ट एवरी डे। रोज के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आती है वहां पे। अब टेस्ट एवरी संडे को होने वाला है 10 बजे। मॉड्यूल विल स्टार्ट ऑन 18th of March। मॉड्यूल का प्राइस ओनली 2000 है, बट इफ यू नीड मॉड्यूल 1 की रिकॉर्डिंग इट इज 2500, और इनमें 10% डिस्काउंट आई थिंक अभी चल रहा है। Now, what is module? मैं बता देता हूँ, but this is the Telegram group where you will be part of, है ना, you will be actively part of a group of students who are, है ना, participating, you're solving each other's questions, giving the assignment, students discussing the solutions and all that. This is how the classes will work. These are all live classes. Then you get the quiz, and every question is in the quiz format. And then we get the leaderboard where you know where you stand across the nation, क्योंकि पूरे इंडिया से स्टूडेंट्स हैं इस बैच में। We celebrate in the class, and this is the module that I was talking about. So module 1, which was of 15 lectures, has been completed in January, February. Students of that batch said, sir, dil mange more. So we said, okay, 18 की जगह 36 hours सारे मॉड्यूल कर दिए भाई, जो आप बोलोगे, without increasing the fee, by the way. Now this is what we are starting on 18th of March, but you know, this is work per energy से start होगा. But if you want to see the recording of motion and laws of motion and friction, तो इसकी 2000 fees है. But if you want recording of this will be another 500 rupees plus the discounts and all that. And this is how the module wise it works. So I would recommend कि भाई जल्दी enroll कर लीजिए, limited seats है. So how's the Josh? Okay. Now, how do you buy? You go to Vedantu.com, go to courses and go to Olympiad courses. So you go to Vedantu.com, courses पे क्लिक करोगे, यहाँ Olympiad दिखेगा, क्लिक करोगे, यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, NSCP 2024 Module 2 Mechanics 2 Live and also Module 2 Mechanics 2 Live plus Module 1 Recorded. I'll put the link in the description, but more important also is that you join this Telegram channel. वो group अलग था, group is for students who have already paid the fees and taken the subscription. वो आपस में interaction and all that will happen. But this is a channel which we started recently, VOS, Beyond Books Brigade. So VOS is Vedantu Olympiad School, and obviously you're studying beyond books, so that's your brigade over there. यहाँ पर रोज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस में डालता हूँ, और टीचर्स भी डालते हैं। अभय महाजन सर आप जानते होंगे, इवन ही इज पार्ट ऑफ दिस, एंड यू विल गेट लॉट ऑफ, है ना, फ्री मटेरियल। आप अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर सकते हैं, इसकी तो कोई फीस ही नहीं है। सो अगेन, एंड आई विल सी यू सून बेटा, गुड लक एंड कीप अप द हाई जोश। चलो मिलते हैं फिर क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।